Good morning, everyone. In the previous lecture video, we had discussed the parameters, or you may say the features of development. These features or these factors are generally present in developed nations, and they are not present in underdeveloped nations. Today, we'll proceed to the next concept in the same topic, or under the same topic, that is need of economic development. The same question is asked last year in the subject of Indian economy. क्या ज़रूरत थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, किसी भी नेशन को क्या ज़रूरत होती है. So that those points we are going to discuss. So first of all, first point or first need for economic development, that is for increasing national income and per capita income. National income and per capita income. नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ नीडेड. एंड so the level of national income that increases when the agriculture, the output of agriculture, that increases when the industrial output increases, when all the sectors they perform well, and there is productivity can be seen in all the factors. So पहली ज़रूरत तो ये है, फॉर इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नीडेड. क्योंकि ये इट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, इट इज़ द इनकम अर्नड बाय अ कंट्री, एंड एवरी कंट्री is willing to they generally are willing to earn more and more. So that is reflected by national income. So that is the first need. Then the second need, that is high standard of living. High standard of living of the people. High standard of living, that means it is not necessary that every person if the per capita income is it is good, and if the every person is for example earning a good level of income, that does not mean that the person is enjoying high standard of living. High standard of living का मतलब होता है the person is consuming technological products, the person is consuming nutritional food, he or she is wearing good clothes, and the person has housing facilities and other amenities. अगर ये सारी facilities हैं, then the person is that is called, or the person is said to have a good standard or high standard of living. For enjoying high standard of living, economic development is needed. So generally in the developed nations, it is seen that the people living there, they enjoy high standard of living, and which is generally seen absent when we see it in underdeveloped nations. Then the third need is more capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पूंजी निर्माण होता है. पहले पूंजी को विनियोजित किया जाता है, देन प्रॉफिट्स आर अर्न, दी प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट्स, ये इकट्ठा हो जाता है प्रॉफिट, देन इट इज़ फर्दर इन्वेस्टेड, एंड दिस इज़ हाउ न्यू कैपिटल इज़ जनरेटेड. सो फॉर कैपिटल फॉर्मेशन economic development is needed, because it is one of the primary parameter of the investment or the income earned by any country. So the rate of capital formation, that is generally low in case of underdeveloped nations. So high rate of saving, हमने savings देखा, first step होता है, if the saving increases, people they save money, and that saved money is channelized, and that is lended, that is deposited into various financial institutions. बैंक में या दूसरे financial institutions में जमा हो जाता है पैसा, और उसके बाद then it is lended, it is invested by the industrialist, तो उसको वहाँ invest कर दिया जाता है, and this is how capital formation takes place. और ये सारा प्रोसेस स्लो रहता है या ना के बराबर रहता है अंडर डेवलप्ड नेशंस में. सो फॉर more capital formation, again economic development is needed. Then the fourth need, that is less dependence on agriculture.
agriculture. About say 55% of the total population, they are engaged in agriculture process or agricultural activity in India. But when we talk about say its output, it is around 16-17% of the total national income. So it is generally seen that even if in the developed nation, even if the modern tools are used for agriculture, then also there is less dependence on agriculture. यानी कि फार्मिंग के ऊपर खेती के ऊपर जो है कम जो है आश्रित रहते हैं. यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा देखी जाती है. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नीड. सो क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 50% 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे प्रोड्यूस्ड जस्ट 17% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम. तो ये तो काफ़ी बड़ा गैप है. दैट्स वाई देर इज़ डिस्पैरिटी. सो देर इज़ a need to reduce the dependence on agriculture. That means industrialization that should be increased. People should be employed in industries. So that is also the need. तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है आश्रित जो है कम लोग हों, इसके लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका एक प्राइमरी सूचक है आपका स्टॉक इंडेक्स. और स्टॉक इंडेक्स एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट बताता है बाय द शेयर होल्डर्स और बाय द इन्वेस्टर्स. So that is also one of the need. Then next is full utilization of natural resources. Full utilization of natural resources. डेवलप्ड नेशंस में नेचुरल रिसोर्सेज तो होते ही हैं, साथ साथ इनका फुलर यूटिलाइजेशन भी किया जाता है. जबकि अंडर डेवलप्ड नेशंस में नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि या तो फिर स्किलफुल लोग नहीं होते, या हेल्दी नहीं होते, या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होते, प्रॉपर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं होते. देन दे यूज़ टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता. तो यूटिलाइजेशन फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नीडेड, क्योंकि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस हैं देर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल and there are sufficient number of industries working in those countries. So ये भी एक ज़रूरत है. Then the next need, that is self-sufficiency. Self-sufficiency और self-reliance, यूँ में से अपने ऊपर आश्रित होना. So economic development is that is needed to achieve the objective of self-sufficiency. इकोनॉमिकली डेवलप वही नेशन होता है जो कि जहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स आर जनरली हायर देन इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट्स आर ऑलवेज लेस. दैट मीन्स एक्सपोर्ट ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि दे आर सेल्फ डिपेंडेंट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. दैट्स वाई दे आर एक्सपोर्टिंग इट. एक्सपोर्ट जब किया जाता है तो एक्सेसिव जो मटीरियल होता है या सर्विसेज होते हैं उसी को एक्सपोर्ट किया जाता है. इम्पोर्ट अगर कम है, दैट मीन्स दे आर सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर आश्रित हैं ज़्यादातर हर तरह के प्रोडक्ट्स में. इंपोर्ट सिर्फ उन्हीं को चीज़ों को करते हैं जहाँ जिस चीज़ के में वो सेल्फ रिलायंस नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नीड. सेल्फ रिलायंस को भी या सेल्फ सफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है. देन नेक्स्ट नीड, दैट इज़ इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट वेन्यूज़. इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. डेवलप्ड नेशंस में आप देखेंगे कि द पीपल आर मोर स्किलफुल, दे आर एजुकेटेड, दे आर हेल्दी, ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेते, इंडस्ट्रीज़ आर वर्किंग इन with proper production capacity or up to proper production capacity. In that case there are sufficient employment opportunities. और अगर हम इसके contrary देखेंगे अंडर डेवलप्ड नेशंस में there is a problem of unemployment. तो कारण उसके कई हो सकते हैं, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन भी है, फिर भी वैकेंसीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल. एजुकेशन का और स्किल का एक बहुत बड़ा गैप है. सो फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नीडेड बिकॉज देयर विल बी सफिशिएंट नंबर ऑफ industries, there will be proper training and development courses that will be run in various universities and autonomous institutes. And for those
those activities will definitely increase the employment opportunities in those nations. The next need, that is solution of vicious circle of poverty. Solution of vicious सर्कल ऑफ पॉवर्टी. तो ये अकॉर्डिंग टू दी ए फेमस इकोनॉमिस्ट, नर्क्स है उसका नाम, NURKSE. ही सेज ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर. तो ये एक विशियस सर्कल है. मतलब सर्कल मतलब एक तरह का घेरा है जिसमें एक बार कोई अंडर डेवलप नेशन है, वो अगर गरीब है तो वो गरीब ही होता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट के, तो इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं. इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, तो हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं होता. तो ये और ज़्यादा विशियस होता चला जाता है और घातक होता चला जाता है. इसका सॉल्यूशन के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन सारी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है. जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट, people will start earning, then they'll invest in capital market, and there will be more number of investment. Then next need, that is formation of human capital. Formation of human capital. ह्यूमन कैपिटल हमें पता है, ये ह्यूमन बींग्स को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको कैपिटल माना जाता है. और एफिशिएंट होना चाहिए. पीपल शुड बी स्किलफुल होने चाहिए. दे शुड बी एजुकेटेड एंड दे शुड बी हेल्दी. देन देयर विल बी मोर कैपिटल और मोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो फॉर इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ नीडेड, क्योंकि अंडर डेवलप्ड नेशंस में इन तीनों की चीज़ों की कमी, ओवर पॉपुलेशन होगा लेकिन पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो नौकरी करने लायक नहीं होते, या बीमार होंगे, या स्किलफुल नहीं होंगे, या एजुकेटेड नहीं होते. इन दैट केस अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और बहुत सारी वैकेंसीज भी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में. सो इन दैट केस, फॉर इंक्रीजिंग द कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट that is needed. Economic development that increases educational level of people living in that country. Medical facilities also increases, क्योंकि economic development का एक सूचक ये भी है, the earnings of the government, that also increases. They invest in medical, for providing medical facilities, better education facilities, better health services, and likewise the life expectancy of the people also increases. So people, they become less ill, वो कम बीमार होते हैं, and standard of human capital is improved. So for increasing the human capital formation, again economic development is needed. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दिन में, एक महीने, एक साल में आने की का एक स्टेज नहीं है. इट टेक्स सेंचुरीज. सो द कंट्रीज, दे आर सपोज टू स्ट्राइव हार्ड एंड बी प्रोग्रेसिव on the path of development, and then they'll be able to achieve all the objectives. So that is all. और ये क्वेश्चन था जो that is the first question of the assignment. So thank you.